आज की वीलॉग में हम एक ऐसे मौजू पे बात करने जा रहे हैं जो दुनिया भर की कम्युनिटीज को मुतासिर कर रहा है। वो है लाइब्रेरी का दौरा करने के रुझान में कमी। एक वक्त था जब ये लाइब्रेरियां इल्म और दरियाफ्त के लिए भरपूर जगह थी, लेकिन अब बहुत सी लाइब्रेरियों में आने वाले अफराद की तादाद कम हो रही है। डिजिटल मीडिया के अरूज, पढ़ने की आदत में तब्दीली और मसरूफ तर्ज ज़िंदगी के बायस लोग इन कीमती अवामी वसाइल से दूर हो रहे हैं। लाइब्रेरियां सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं, ये कम्युनिटी सेंटर्स इल्म तक रसाई के दरवाजे और ज़ाती तरक्की के मौके फराहम करती हैं। चाहे आप कुछ नया सीखना चाहते हों, सुकून का लम्हा तलाश कर रहे हों या दूसरों से जुड़ना चाहते हैं, लाइब्रेरी में हर किसी के लिए कुछ ना कुछ मौजूद है। तो वक्त निकालें, अपने मकामी लाइब्रेरी का दौरा करें और इन लातादाद मौक़ों का को दोबारा दरियाफ्त करें जो ये पेश करती हैं। नवादरात सिर्फ पुरानी अशिया नहीं है, ये तारीख, दस्तकारी और सकाफत की अक्कासी करते हैं और माजी से एक मुनफरिद ताल्लुक फराहम करते हैं। चाहे आप नवादरात के शौकीन जमा करने वाले हों या इन कीमती चीज़ों के बारे में तजस्सुस रखते हों, हमारे साथ शामिल हों, क्योंकि हम इन नवादरात की दिलकशी, कुदरत और देरपा खूबसूरती को दरियाफ्त करने जा रहे हैं। ये एक डैगर है जो वर्ल्ड वॉर टू में इस्तेमाल किया गया होगा। इंतहाई नादिर और खूबसूरत एंटीक जो हमारे कलेक्शन में मौजूद है। इसकी मज़ीद डिटेल और बाकी जो हमारा कलेक्शन है उसके मुतालिक उनकी डिटेल अब आपको वीडियो में आगे मिलेंगी। ये वर्ल्ड वॉर टू के ज़माने का वर्ल्ड वॉर टू में इस्तेमाल होने वाला डैगर है। 1945-43 के दरमियान ये इस्तेमाल किया गया होगा ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश आर्मी के हाथों। ये आज हम इसकी क्लीनिंग करेंगे। This is before cleaning. इसके क्लीनिंग के लिए भी हम वही मटेरियल यूज़ करेंगे। चूँकि ये ज़्यादा जंग इसमें लग चुका है, इसमें हम इसे DW45 से भी अप्लाई करेंगे। उसके ज़रिए इसका जंग जो है वो रस्ट काफ़ी हद तक साफ़ हो जाएगा। Unfortunately, I'm going to be selling this one soon. I don't want to, but I just bought a new one. It's also a Wilkinson from 1918. It's slightly cooler because it's got New Zealand artwork on it. It's got the international and New Zealand being a born Kiwi. I'll jump into some of the markings you'll come across on these quickly because there are a lot. So I've gone through the manufacturer's markings. Good example, but not good more. This one's not too bad. So you'll have your property marks and royal ciphers. So there we go. We've got the Crown and the GR for George Rex. A whole bunch of royal ciphers depending on which one was in place at the time. Underneath that we have the 1907, which is the model. Underneath that we have the 5 on the left and the 18 on the right, indicating it was manufactured in May, being the 5th month of 1918, 18 being 1918. And below that we have our manufacturer, Wilkinson. And you always find that on one side of the password. And then on the reverse, you pretty much always have this. So at the top you'll have a broad arrow for government acceptance mark. You'll have a couple of inspection marks, like what we have here with the little crown P6, which will probably be the individual inspector and and the E represents, sorry, the X represents the bend test, and that was passed the bend test. So they stick it in the machine and they bend it to a certain point and the belt is now being passed. You'll also get a lot of additional markings like here, sometimes being refurbishment marks, rework marks, to go with them. Occasionally you come across one of these and have 6 or 7 dates and got those many inspection marks on there, and that's just one state of service and all those additional inspection marks put on.
property marks for all various different countries actually. इसकी क्लीन तो हुई है किसी हद तक, Canada will generally have लेकिन लगता है कि इस पे वक्त के असरात कुछ ज़्यादा हैं और इसकी क्लीनिंग उस हद तक मुमकिन नहीं है। All kinds of different things, and you also have military district numbers like got just here, although it's worn off. This one was second MD, second military district for the state of New South Wales. इसकी सफाई हो चुकी है। Australia. आज ये एंटीक्स की सफाई का दिन बनाया जा रहा है। ये हमारे एंटीक्स जो हमारे फोक इवेंट से होते हुए हम तक पहुँचे हैं। ये हो गया ये खासदान, ये एज़ पर रिकॉर्ड ये हमारी मदर के जहेज़ का सामान है जो कि हमने बड़े अच्छे प्यार से अब तक मेंटेन किया हुआ है। अब उसकी सफाई रेगुलरली करते हैं। ये पानदान है, आज इसकी भी सफाई करते हैं। ये इंग्लैंड का बना हुआ एक लैम्प है जो आज से कम 100-125 साल पहले वाले साहब ने परचेज़ किया था। जिस ज़माने में वो लोरलाई और ज़ियारत के इंटीरियर बलूचिस्तान में उनकी डेपुटेशन ड्यूटी हुआ करती थी, तो वहाँ पे लाइट ना होने की वजह से वो इसे इस्तेमाल किया करते थे। आखिरी अदवार में मुझे भी थोड़ा सा याद है, जो मेरी मेमोरी में जहाँ तक काम कर रही है, वाली साहब इसको उस तरीके से मेंटेन किया करते थे जैसे आजकल के ज़माने में हम जनरेटर को शाम के वक्त उसकी मेंटेनेंस, उसकी देखभाल करते हैं। हर शाम वाली साहब इसकी सफाई सुथराई, लैंप की, शीशे की, ऑयल की, वो सब चीज़ें चेक करते थे और उसे रात भर इस्तेमाल किया जाता था। इसकी सफाई के लिए हमने लेमन, सर्फ, सिरका, सोडा, ये सब चीज़ें जो कि घर में मौजूद होती हैं वो ली हैं और इन्हें अब इस पे अप्लाई करते हैं। In the life of our planet, the Earth started to recover from its collision with Theia, and debris from the disaster formed the Moon. ये फ़र्क आपके सामने, ये आधा पानदान साफ़ हो चुका है और अभी आधा बाकी है। ये इंतहाई आसान घरेलू तरीका है जिससे आप इन महंगे नवादरात को बहुत आसानी से महफूज रख सकते हैं। देखिए आधा पान कवर साफ़ हो चुका है और आधा भी बाकी है। Takes 2.3967 seconds to travel to the moon and back. When I see the moon in the sky, instead of thinking romantic thoughts, I think, gee, I hope the laser's working okay. It may not be romantic, but it is amazing. Each year, Wyant's laser beam takes a little longer to bounce back, because each year, the moon is a little further away. One of the reasons that scientists want our data is to confirm their suspicion that the moon really is moving away from. ये बेहतरीन तरीके से चमक चुके हैं। इसकी खूबसूरती दोबाला हो गई है इस चमक के साथ। ये भी एक इंतहाई नफीस एंटीक आइटम, जैसा कि मैंने बताया कि हमारे वालिद साहब ने आज से कोई 100 साल पहले परचेज़ किया था। इसके ऊपर एक शीशे का ग्लास होता है और इसके अंदर जो लाइट होती है वो फिर उस ग्लास के ज़रिए पूरे रूम को इनलाइटन करती है। वो ग्लास नहीं मिल पा रहा है, मैं काफ़ी कोशिश में हूँ कि उसका ओरिजिनल ग्लास मुझे कहीं से मिल पाए। The collision itself takes about 20 or 30 hours, and the moon formation process This is before starts cleaning. right after with a lunar core, a lunar embryo that forms
during the first month, but continues to grow during the first millennium. So there is a proto-movement that forms very quickly in about a month from the material that is already far enough away. But after that, the moon continues to grow by collecting all the material that migrates farther from the Earth. As soon as the moon begins to form, the tide as we know it develops. So when the moon started forming, you had tides that were 4,000 times stronger than they are today. Tides 4,000 times greater This is half cleaned. on an Earth which was You then can see the only a difference. ball of molten lava. This portion is Because of cleaned this up, collision, cleaned the up, Earth is still and completely ये molten, अभी बाकी करना liquid, है. and the moon, which is then ये only some इंतहाई 12,400 आसान और miles इफेक्टिव away, causes waves घरेलू and a tide नुस्खा है more than जिसके ज़रिए आप 1,600 अपने feet high, which कीमती agitates यूटेंसिल्स, an अपने infinite कीमती magnetic मुआवजात को ocean. बचा सकते हैं. Plastic fluid. The Earth literally deforms with the passage of each tide, which passes at full speed every 3 hours. Projecting a tidal wave of 4.5 billion years ago onto a landscape today would result in folding effects as high as mountains. So the Earth was pretty much just fluid. ये 20 साफ हो The moon, चुका है. obviously being much closer चमक to रहा us, is huge in the sky. So you can imagine fluid लीजिए is जनाब, lava, ये भी चमक and चुका है. seeing this gigantic इसका moon लोगो that takes up the entire sky, भी passing चमक over रहा you है every और 6 hours, अब because साफ the पढ़ा जा rotation सकता period है. of the Earth is of the order of 6 ये hours. फिनिक्स हिंक पेटेंट लैंप है. इट इज़ मेड इन यूके The Earth is still और spinning at बाकायदा full तौर पर ये speed. The रजिस्टर्ड है. moon crosses the sky every 6 hours, occupying इसको अभी most of गूगल the करके हम space. देखते हैं A इसकी year has more डिटेल. than 1,400 days. Wow, Oceans and 350 continents pounds. are not yet I am formed. rich. We will come back to that. It is the saga of the Earth and the Moon, the two sister planets of mixed blood. ये लीजिए, ये तैयार On हो the चुका other है. side of the Earth, a signal from the sky is impatiently awaited. Life depends on it. But out of this catastrophe came a new beginning. It set in motion a chain of events that would transform the Earth from a vision of hell to the blue-green oasis we now call home. The collision was so huge that it इंतहाई नफीस काम, खूबसूरत तरीन, इंतहाई नफीस काम. इस पे वक्त के असरात कुछ ज़ाहिर हो रहे हैं, लेकिन ये भी रिपेयरेबल हैं. इंशाल्लाह इसको भी रिपेयर कराएंगे. ये हमारी वालदा साहिबा के जहेज़ की कपरात. गालिबन ये फ्रूट ट्रे है, इसमें फ्रूट या सब्जियां रखी जाती होंगी. इंतहाई नफीस, माशाअल्लाह, खूबसूरत तरीन. ये इंतहाई नफीस आइटम, इसे खासदान कहते हैं. इंतहाई खूबसूरत यूटेंसिल जो अपने दौर की नफासत और कल्चर का खूबसूरत नमूना. ये खाजान कहलाता है. इसके अंदर पान की सर्विंग होती है. पान बना के इसमें पान सर्व किया जाता है महफिल में. a massive impact very nearly destroyed our planet. But out of this catastrophe came a new beginning. It set in motion a chain of events that would transform the Earth from a vision of hell
to the blue-green oasis we now call home. The collision was so huge that it altered the mass. Realizing now is that catastrophes have played a much larger role in the evolution of life on Earth than anybody believed earlier. You have to realize that we are at the end of this long chain of unique events. Had they played out differently, this guy wouldn't be sitting on this rock here. There's only one conclusion. We're not here because we did something right. We're here because we're lucky. The collision with Thea was just the first of many random rolls of the dice. It really makes you think about this completely unique sequence of random events